Hello students, welcome to Meetu Maths classes. Your question is, express the following complex number in the form of a plus iota b. And your complex number is given like this when theta is equals to pi by 6. So, to convert this complex number in the form a plus iota b, first observe your complex number. First this part is can easily be converted into Euler's form, because this is in the form of cos theta plus iota sin theta or cos theta minus iota sin theta, and the denominator is can also be converted in Euler's form easily, cos theta minus iota sin theta. Now observe this complex number, this is sin 5 theta plus iota cos 5 theta. अब आपको इसको यूलर्स में चेंज करने के लिए आपको रियल पार्ट के में कॉस होना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू ट्राई दिस पार्ट रियल. सो आप इस पार्ट को रियल कैसे बना सकते हो? आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं हम. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली. दिस वन इज ओके, कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा रेज टू पावर 5. नाउ यू कैन डू वन थिंग कि आयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें. जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम आयोटा साइन 5 थीटा और यहाँ आयोटा स्क्वायर बन जाएगा. आयोटा स्क्वायर बन जाएगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू -1. तो इट विल गिव यू cos 5 थीटा रेज टू पावर 4. दैट मीन्स बेसिकली आपने आयोटा रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया है. So you are also going to divide by iota raised to power 4. But iota raised to power 4 is 1 only. So it will be 1 only. Now you can easily, now this form is not perfect. तो आपको एक माइनस साइन भी कॉमन निकालना पड़ेगा. यूलर्स फॉर्म क्या होती है आपकी? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. तो आप एक माइनस को कॉमन निकाल लोगे. आप कॉस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा रेज टू पावर 5. माइनस अगर आप कॉमन निकालते हो तो बेसिकली माइनस रेज टू पावर -1 रेज टू पावर 4 कॉमन आएगा एंड दैट विल बिकम पॉजिटिव. सो दिस विल बिकम कॉस 5 थीटा माइनस आयोटा sin 5 theta raised to power 4 and divided by cos 4 theta minus iota sin 4 theta raised to power 6. Now this can be written as Euler's form. आपकी क्या कहती है? Euler's form is that you can write cos theta plus iota sin theta is equals to e raised to power iota theta, and cos theta minus iota sin theta can be written as e raised to power minus iota theta. This is your Euler's form. So this can be written as e raised to power minus iota 3 theta raised to power 5, and this can be written as e raised to power this is again minus, so minus iota 5 theta raised to power 4 divided by, you can write this as e raised to power minus iota 4 theta raised to power 6. Now this is equals to e raised to power minus iota 15 theta into e raised to power minus iota 20 theta divided by e raised to power minus iota 24 theta. Now this can be written as, आप पावर्स ऐड कर लेंगे. -15 -20 इज इक्वल्स टू e raised to power minus iota 35 थीटा, और ये -24 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा +24 थीटा. So this is equals to e raised to power minus iota 11 theta. Now this can be written as cos of 11 theta minus iota sin of 11 theta. Your complex number will become this only. Now
you have to find your complex number when theta is equals to pi by 6. When theta is equals to pi by 6, your z will become cos 11 pi by 6 minus iota sine 11 pi by 6, and 11 pi by 6 can be written as 2 pi minus pi by 6. This is also 2 pi minus pi by 6, and 2 pi minus pi by 6 will be cos pi by 6, and sine 2 pi minus pi by 6 will give you minus sine pi by 6, and cos pi by 6 will give you root 3 by 2 plus iota 1 by 2. So this is the final answer of your complex number. Z is equals to a plus iota b, where a is root 3 by 2 and b is 1 by